Hello students, good morning everyone. Students, today in this video we are going to learn about the impact of globalization in India. Okay, students, in our last video we have completed the topic World Trade Organization, and as well as we have studied about the liberalization. That was the second impact of the globalization. Okay, that was a factor that enabled the globalization. Now we'll see अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ओके, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर ये ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. तो ग्लोबलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका हमारी इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो मेनली द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी सीन on these peoples which are the producers, workers and buyers. Okay, so first one is producers. What was the impact of globalization on the producers? So first one, आपने देखा होगा producers, they may be small producers and the big producers. तो सबसे ज़्यादा impact किस पर पड़ता है, benefits किसको मिलते हैं, big producers को. So the big producers get profit by joining hands with MNCs. ठीक है, बड़ी कंपनीज होती हैं क्या करती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं, और एमएनसीज होती हैं हैंड ज्वाइन करती हैं लोकल के जो बिग प्रोड्यूसर्स होते हैं. ओके, सो द बिग प्रोड्यूसर्स गेट प्रॉफिट बाय जॉइनिंग हैंड्स विद द एमएनसीज, while the small producers they face loss and consequently they have to shut down their business. क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंपटीशन अराइज होता है, they cannot compete their production at the global level, so they just used to shut down their business and they had to face the loss. जैसे कि हमने चाइनीज़ टॉयज़ के बारे में पढ़ा था, 70 to 80% toys were replaced by the Chinese toys. Then the competition was higher and Indian small toy producers had to shut down their business. Okay, so this situation creates this is the impact of globalization on the producers. Next is the workers. Workers are the second one who face the impact of globalization. में सब में उनको benefits भी होते हैं. क्या होते हैं, MNCs reduce unemployment. what MNC provide the more opportunities for jobs, and workers there the unemployment reduced. Okay, third one is the buyers. Buyers में क्या होता है, the buyers also two types, rich buyers and small buyers. ठीक है, so rich buyers get choice in the market, especially rich buyers get the choice in the market, and just because they don't have the lack of the resources, so they do not think about the prices, but they have the multiple choice of the products and the services. While the small buyers means those who are not so rich, poor buyers, they just seek to low prices. तो जब low prices मिलते with good quality, then the small buyers also attract towards the new products. Okay, so ये employment को बढ़ाता है, और क्या था, मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड होती हैं, बिग प्रोड्यूसर्स का बेनिफिट्स होते हैं और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लॉस झेलनी पड़ती है. सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नोटिस ऑन दीज डिफरेंट पीपल्स हु फेस द लॉस एंड बेनिफिट्स. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स पर इम्पैक्ट होता है, वर्कर्स पर होता है, बायर्स पर होता है. ओके, नाउ लेट अस सी as which are the steps taken by the government to attract the foreign investment. ठीक है, अभी क्या हुआ, लास्ट 20 ईयर्स में हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है. क्यों हुआ है, जस्ट बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ओनली द लोकल एंड गवर्नमेंट मीन्स द नेशनल मार्केट डोंट गेट द बेनिफिट एज वेल एज द MNCs ऑल्सो. जितना बेनिफिट किसी दूसरी कंट्री में जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ होता है, उतना ही बेनिफिट वो फॉरेन MNC भी पा रही होते हैं. ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ implemented many ways, and the government has taken various steps to attract the foreign investment. ठीक है, तो हमारी कंट्री ने ऐसा क्या किया जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है. सो फर्स्ट वन इज़ SEZ. ये एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है
which is the special economic zone. Okay, so it is a zone which has been created by the government where the SEZ provides the world class facilities. वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ किस में मिलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, रोड्स में, वाटर ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड अदर आईसीटी फैसिलिटीज़। तो जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं जो कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं जिस कैटेरिया में आती हैं, एसईजी के अंडर में आती हैं, देन दोज कंपनीज डू नॉट हैव टू पे द टैक्सेस फॉर 5 years। ठीक है, वो एमएनसी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है दैट दे आर फ्री फ्रॉम द टैक्सेशन, उनको टैक्सेशन से फ्री कर दिया जाता है। तो ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाला तरीका है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। ठीक है, एंड in this, the MNCs were free for the taxation for 5 years. Second one, the flexibility in labor laws। क्या होता है? लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी आप ये समझ लीजिए, इफ़ देयर इज समथिंग परमानेंट देन कैन यू चेंज दैट? नो। इफ दैट थिंग इज टेम्परेरी then you can change। Okay, similarly, labor on temporary basis, लेबर ऑन टेम्परेरी बेसिस, जिनको कि कभी भी अपॉइंट किया जा सकता है और कुछ समय के बाद उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो इट रिड्यूस दियर लेबर कॉस्ट एंड एज वेल एज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर लेबर लॉस नहीं है, बट द फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस इट गिव्स द benefit to the MNCs that they can appoint a labor on the temporary basis। ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ने पर वो लेबर्स अपॉइंट कर सकते हैं और हटा सकते हैं, जो कि उनका लेबर कॉस्ट रिड्यूस करता है और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द फेयर ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है, इज इट इक्वल दैट डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज बोथ आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। सो फेयर ग्लोबलाइजेशन है या नहीं, तो गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल होता है, गवर्नमेंट क्या करती है जैसे कि फेयर ग्लोबलाइजेशन है। सो फर्स्ट वन, द गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोटेक्ट बोथ रिच एंड पुअर्स। क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन फेयर रहे, फेयर तभी होगा वेयर द पुअर एंड द रिच बोथ हैव द सेम रूल्स। ठीक है, तो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पुअर प्रोड्यूसर्स के लिए और रिच प्रोड्यूसर्स के लिए सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लेबर लॉज गिव द इक्वल राइट्स टू लेबर्स, एंड लेबर लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी लेबर को एक्सप्लॉइट कर सकती है। सो लेबर लॉज गिव्स द इक्वल राइट्स to the laborers that they can consume their equal rights। Okay, third one is the government should support the small producers that they could enhance their performance and they can enhance their लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड भी बढ़ा सके, प्रोडक्शन बढ़ा सके, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा प्रिविलेजेस देनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो डू, द गवर्नमेंट शुड ट्रेड the government should place the trade barriers if required। if there is the over exportation, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट से कम, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? द गवर्नमेंट हैव टू प्लेस द ट्रेड बैरियर्स। और ट्रेड बैरियर्स क्या होंगे? रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो टैक्सेशन भी बढ़ा सकती है और कोटा भी सेट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है निगोशिएशंस एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेन रूल्स। जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उसके लिए निगोशिएशंस किए जा सकते हैं, मतलब बातचीत की जा सकती है, समझा जा सकता है रूल्स को। ठीक है, सो निगोशिएशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। सिक्स वन इज द गवर्नमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दे शुड बी यूनाइट। ठीक है, क्या होना चाहिए? जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको यूनाइट होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट द डेवलप्ड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज़। ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दे हैव द एमएनसीज, दे मेड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड दे गेट द बेनिफिट। वो क्या होती है? सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाती है। एंड द कंट्रीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज should unite to fight against the developments। Okay, 7.1, the government should campaign and protest against the unfair rules। If the government is seeking that there is unfair rules,
then the government can protest and campaign against it. Okay, और जिससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 164 कंट्रीज मेंबरशिप कर रही हैं, तो देर इज़ नॉट ऑल द कंट्रीज़ आर डेवलप्ड, उसमें कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। सो अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ यूनाइट हो जाएंगी देन there would be no exploitation and there would be the equal benefit to the developed and the developing countries। ठीक है, तो फेयर रूल्स होने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले सकती है। सो स्टूडेंट दीज आर द some ways in which are the government should follow, and the government can promote the fair globalization. Okay, so students, I hope all these topics are clear, that the role of the role of the government in the fair globalization, and the steps taken by the government for the foreign investment, and as well as the impact of globalization in India. Okay, so we'll meet in further class. There we'll discuss about the impact of globalization and the Indian economy, जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। जैसा कि हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, तो ग्लोबलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी। ओके, so it will be our tomorrow's topic. Till then, stay connected to studies, read this chapter, watch the video, and ask your queries if you have any.